फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंडोक्राइन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स which produce various hormones is called endocrine system. Okay, the endocrine system is also called as hormonal system. In addition to nervous system, the endocrine system also helps in coordinating the activities of the body. The endocrine system is composed of several endocrine glands. A ductless gland is called endocrine gland. Endocrine glands secrete its product directly into the bloodstreams. Hormones are produced in the endocrine glands. Hormone is mainly composed of the protein. Hormones assist the nervous system in control and coordination. Nervous system do not react to every nook and the corners of the body, hence hormones are needed to affect the control and the coordination in those parts. Moreover, unlike the nervous system, hormonal control is somewhat slower. तो पहले हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। The group of endocrine glands which produce various hormones is called endocrine system. अब hormones क्या होते हैं? Hormones are the chemical messenger. Hormones क्या होते हैं? Hormones are the chemical messenger which contributes the activities of living organisms and their growth. Hormones are secreted in small amount by the endocrine glands. Hormones एक chemical messenger है जो कि हमारे body के various activities को control करता है. Gland क्या होते हैं? अब हम पढ़ेंगे gland क्या होते हैं. A gland is a structure which secretes a specific substance in the body. There are two types of the gland: exocrine gland and endocrine gland. Exocrine glands are the glands having duct. That is why they secrete its product into the duct. Okay. For example, salivary gland. Salivary gland secretes the saliva into the duct called the salivary duct. Now the second is the endocrine glands. Endocrine glands are the ductless gland which secrete its product directly into the bloodstream. Hormones वो chemical messenger होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होता है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं. अब ये ब्लड इस केमिकल को कैरी करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे उसको फंक्शन कराना है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में. तो ब्लड स्ट्रीम इन्हें साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ लेकर के जाता है. साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ पे ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और साइट ऑफ एक्शन वो होता है जहाँ पे इन्हें हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लेकर के जाया जा रहा है फंक्शन कराने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन कराने के लिए. अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी के स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन पे एक्ट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन. तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स secreted in a very small amount by specialized tissues called the ductless gland. They act on the target tissues or the organs usually away from their sources. The endocrine system helps in the control and the coordination with the chemical compounds called the hormones. There are two types of the glands called the exocrine glands and the endocrine glands. Exocrine glands are the glands that discharge its secretion by means of duct. Okay. For example, salivary duct. Salivary gland which is used to secrete the saliva into the duct called the salivary duct. Endocrine glands are the ductless gland which is used to secrete its duct directly into the blood streams. The endocrine glands are located in different parts of the body as we can see from this figure.
Hypothalamus gland is present in the brain. Pituitary gland is present just below the brain. Thyroid gland is attached to the windpipe in our body. Thymus gland is present in the lower part of the neck and just above the chest. Pancreas is present just below the stomach. Adrenal gland is present at the top of the two kidney. Ovaries are the gland which are present in the female only, and ovaries make the two female sex hormones called the estrogen and progesterone. Testes are the glands which are present only in the male, and the testes make the male sex hormone called testosterone. The complete coordination in the human body is achieved by the nervous system and the endocrine system working together. The main center in the body for the coordination of the two systems of the control, the nervous system and the endocrine system, are the hypothalamus and the pituitary gland. The hypothalamus plays a main important role in collecting the information from these regions of the brain and from the blood vessels passing through it. This information is passed on to the pituitary gland, which by its own secretion directly or indirectly regulates the activities of all the other endocrine glands. Hence the hypothalamus gland is present. This is the hypothalamus gland, we can see in the figure clearly, and this gland is present in the brain. This gland produces releasing hormones and the inhibitory hormone. The function of the hypothalamus is to regulate the secretion of the hormones from the pituitary gland. Hypothalamus का main function क्या है? इसका function है regulation, pituitary glands के hormones के secretion का regulation का. Pituitary gland figure में दिखाया गया है, just below the brain present होता है. Pituitary gland is present just below the brain. इसका साइज क्या होता है? एक मटर के दाने के बराबर होता है. It is a pea-sized gland located at the base of the brain. Pituitary gland को हम master gland भी बोलते हैं क्योंकि it controls the secretion of all the other endocrine glands. Pituitary gland को master gland इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे endocrine glands के secretions को control करता है. It also secretes the growth hormones. Under-secretion of the growth hormones. अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स कम अमाउंट में सिक्रेट होंगे तो एक डिसीज होता है ड्वार्फिज्म कहते हैं उसको. अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो गया, ओवर सिक्रेशन हो गया, तो एक डिसीज होता है जिजेंटिज्म उसे कहते हैं. जिजेंटिज्म अगर चिल्ड्रंस में होगा ये डिसीज तो जिजेंटिज्म बोलेंगे, अगर एडल्ट्स में होगा तो एक्रोमेगली बोलेंगे. थायराइड ग्लैंड, इसका शेप बटरफ्लाई शेप होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह शेप है इसका. ये लोकेटेड होता है हमारे थ्रोट रीजन में, विंड पाइप से अटैच्ड होता है. ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. एंड द आयोडीन इज वेरी नेसेसरी टू सिंथेसाइज द थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक डिसीज होता है ग्वाइटर. ग्वाइटर डिसीज का मेन सिम्टम है हमारे नेक रीजन जो होगा वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन. फॉर दिस people are advised to use the iodized salt for cooking purpose to prevent from the goiter disease. Because iodine is required by the thyroid gland to make the thyroxine hormone. Since the iodized salt contains the appropriate amount of the iodine compound, such as the potassium iodide, so the iodized salt can provide all the iodines needed by the thyroid gland to make the sufficient amount of the thyroxine hormones for our body. Since there will be no deficiency of the thyroxine in the body, and the goiter cannot take place and the goiter disease cannot develop. Iodine necessary होता है
थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए पीपल को एडवाइस किया जाता है, इसलिए लोगों को एडवाइस किया जाता है आयोडाइज सॉल्ट यूज करने के लिए हमारे कुकिंग पर्पस में, क्योंकि उस आयोडाइज्ड सॉल्ट में एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होता है। और ये आयोडीन जब एप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर हम अपने डाइट में लेंगे तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रिपेयर करेगा, तो जिसकी वजह से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो गोइटर डिसीज होगा ही नहीं। पैराथायरॉइड ग्लैंड, there are 4 small parathyroid glands which are embedded in the thyroid gland. Parathyroid gland secretes a hormone called the parathormone. The function of the parathormone is to regulate the calcium and the phosphate level in the blood. Thymus gland. Thymus gland lies in the lower part of the neck and the upper part of the chest, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। Thymus gland secretes the thymus hormones which plays a role in the development of the immune system of the body. The thymus gland is large in the young children but shrinks after puberty. Pancreas. Pancreas is a leaf-like gland present below the stomach in the abdomen, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं एक leaf-like structure present है जिसे हम बोलेंगे pancreas. पेनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट मैन्युफैक्चर्स 2 हार्मोन, इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन। Both these hormones act as antagonistically and regulates the sugar level in the blood. As an endocrine gland, it manufactures 2 hormones, insulin and glucagon. Both these hormones act antagonistically and regulates the sugar level in the blood. The insulin hormones controls the metabolism of the sugar. If due to some reason the pancreas do not produce and secretes the sufficient amount of the insulin into the blood, then the sugar level in the blood rises, and the high sugar level in the blood causes very harmful to the body of the person, and the person suffers from the disease called the diabetes. The diabetes patients are advised by the doctor to controlling their diet, reduce weight, doing the physical exercises and taking the regular medicines. And as an exocrine gland, it secretes the enzyme to break down the protein, lipid, carbohydrates and the nucleic acids in the food. Adrenal glands are present on the top of the 2 kidney. Adrenal gland को gland of emergency भी बोला जाता है। They occur in pair above each kidney. It decreases its size with age. It secretes the hormone called the adrenaline hormone, which helps in the fight and flight response. When we are faced with a dangerous situation, like being chased by a dog, then our nervous system stimulates the adrenal gland to secrete the more adrenaline hormone into our blood. This adrenaline hormone increases our heartbeat, breathing rate, flows blood into the muscles and causes the liver to put more glucose into our blood. All the actions of the adrenaline hormone is used to produce a lot of the energy in our body very, very quickly, so that this energy help us to run away very fast from the dog to save ourselves. इसलिए इस हार्मोन को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है क्योंकि ये हार्मोन हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर लॉट ऑफ द एक्शंस। ये एड्रेनलिन हार्मोन वैसे तो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन अगर हम किसी डेंजरस सिचुएशन को फेस करें या अगर हम किसी एक्साइटेड सिचुएशन में रहें तो ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। तो इसकी वजह से ये हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हमारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है एंड लॉट ऑफ ग्लूकोज
और बहुत सारे ग्लूकोज ब्लड में जाते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी को मिल सके। इसलिए इस एड्रिनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। मेन फंक्शन है एड्रेनालिन हार्मोन का हमारे हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो जब ये एड्रेनालिन हार्मोन हमारे बॉडी में अगर लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है, जब हम एक्साइटेड होते हैं या किसी डेंजरस सिचुएशन में फेस करते हैं या बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, तो ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को हमारे ब्लड में सेंड करता है ताकि हमारे बॉडी को लॉट ऑफ एनर्जी मिल सके। गोनेड्स are the gamete producing organ, testes in the male and the ovaries in the female. Testes produce the male hormone called the testosterone and the ovaries produce the female hormone called the estrogen and the progesterone. Testosterone and estrogen helps in producing the gametes and are responsible for the sexual characters in the male and the female respectively. And the progesterone is the pregnancy hormone. जो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसपे मैंने सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखा है और उसके लोकेशन, वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसके फंक्शन बताया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ये हमारे एट द बेस ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। Thyroid stimulating hormone stimulates the function of the thyroid gland and follicle stimulating hormone stimulates the follicles during the ovulation. Thyroid gland neck में present होता है, thyroxine hormone secrete करता है, controls the general metabolism and the growth in the body. Adrenal gland kidney के above present होता है, above the kidney present होता है, adrenaline hormone secrete करता है, prepares the body for the emergency situations, hence is called the fight and the flight hormone. Pancreas stomach के पास present होता है, insulin hormone को secrete करता है and controls the blood sugar level. Testis hormone present in scrotum. Testosterone it secretes testosterone hormone. Sperm production, development of the secondary sexual characters during the puberty. Ovary, its location is it present near uterus, secretes estrogen hormone and its function is egg production, development of the secondary sexual character.